Punishment and human rights. Dand or manavadhikar. Punishment is a mechanism through which society enforces laws and ensures order. However, it must always respect the basic human rights of the accused and convicted individuals. दंड का उद्देश्य अपराधियों को सुधारना, समाज में शांति बनाए रखना और अपराध को रोकना है, लेकिन यह प्रक्रिया मानवीय गरिमा और अधिकारों का उल्लंघन किए बिना होनी चाहिए। दंड क्या है? Punishment refers to the penalties imposed by the legal system on individuals who commit crimes or violate laws. इसका उद्देश्य तीन मुख्य पहलुओं पर आधारित होता है। 1. Retribution प्रतिशोध, अपराधी को उसके कृत्य का दंड देना। Deterrence निवारण, दूसरों को अपराध से रोकने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना। 3. Rehabilitation पुनर्वास, अपराधियों को सुधारना ताकि वे समाज का जिम्मेदार हिस्सा बन सकें। ये जरूरी है कि दंड की प्रक्रिया मानवीय हो और उसमें अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन न हो। Human rights and punishment, मानवाधिकार और दंड. Human rights are the fundamental rights that every individual possesses regardless of their actions or crimes. 1. Right to life. Every individual, including criminals, has the right to life. Example, मृत्युदंड पर बहस इसी अधिकार से जुड़ी है। 2. Protection from cruelty, क्रूरता से सुरक्षा. No punishment should involve torture, degrading treatment, or inhuman practices. Example, हिरासत में यातना देना मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। 3. Right to fair trial, न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार. Punishment should follow a transparent legal process ensuring fairness and impartiality. Types of punishments and related human rights issues. दंड के प्रकार और उनसे जुड़े मानवाधिकार मुद्दे. Death penalty, मृत्युदंड. The death penalty is one of the most controversial punishments. Critics argue that it violates the right to life under Article 21 of the Indian Constitution. Example, Bachan Singh versus State of Punjab, 1980. Rarest of rare, सिद्धांत लागू किया गया. However, गलत सजा के मामले में मृत्युदंड अपरिवर्तनीय होता है, जिससे न्याय का उल्लंघन हो सकता है. Life imprisonment. Life imprisonment is considered a more humane alternative to the death penalty, but prison conditions raise concerns. Example, जेल में भीड़-भाड़, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और खराब व्यवहार मानवाधिकार का उल्लंघन कर. Corporal punishment, शारीरिक दंड. Physical punishments like flogging or whipping are considered degrading and have been abolished in many countries. Example, स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देना अब भारत में प्रतिबंधित है. 4. Solitary confinement, एकांत कारावास. Prolonged solitary confinement can harm mental health, violating human rights. Example, Supreme Court ने Sunil Batra versus Delhi Administration में जेल सुधारों की बात की. Half 5. Modern punishments like community service focus on rehabilitation and align better with human rights principles. Example, छोटे अपराधों के लिए ये एक मानवीय विकल्प है. Human rights violations in punishment processes. दंड प्रक्रिया में मानवाधिकार. 1. Arbitrary sentencing, मनमानी सजा. समान अपराधों के लिए अलग-अलग सजा न्याय की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है. 2. Torture in custody. Forced confessions through torture violate the basic human rights of the accused. Example, D.K. Basu versus State of West Bengal. Supreme Court ने हिरासत में यातना रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए. Overcrowded prisons, PED. Overcrowding, poor hygiene and lack of medical facilities in prisons lead to inhumane living conditions. Bias and discrimination, पक्षपात और भेदभाव. Marginalized communities often face harsher punishments. Example, सामाजिक भेदभाव के कारण कई बार न्याय का उल्लंघन होता है. Delayed justice. न्याय में देरी न केवल अभियुक्त को प्रभावित करती है, बल्कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है. Landmark cases in punishment and human rights. दंड और मानवाधिकारों पर महत्वपूर्ण मामले. Maneka Gandhi versus Union of India, 1978, broadened the interpretation of Article 21, ensuring fairness and reasonableness in legal procedures. 2. Husainara Khatun versus State of Bihar, 1979,
recognise the right to a speedy trial as a fundamental human right. 3. Rajiv Gandhi assassination case, 2014. Death sentences were commuted to life imprisonment due to excessive delays, highlighting mental torture concerns. 4. Vishaka versus State of Rajasthan, 1997. Focused on workplace harassment, emphasizing the need to protect human dignity. Reforms needed in punishment practices. Dand prakriya mein sudhar ki avashyakta. 1. Emphasis on rehabilitation, punvas bajor. Reformative justice should replace retributive practices for non-violent offenders. 2. Prison reform, zail sudhar. Improve infrastructure, reduce overcrowding, and ensure basic amenities for inmates. 3. Strict enforcement against torture, yatana ke khilaf sakti. Implement stricter laws and monitoring mechanisms to prevent custodial torture. 4. Judicial training, nyayik prashikshan. Judges should be trained to ensure human rights are respected in sentencing. 5. Abolition of death penalty, mrityudand samapti. Encourage alternative punishments, focusing on rehabilitation. Conclusion. Punishment is necessary to maintain law and order, but it should never come at the cost of human rights. Dand pranali ka uddeshya nyay pradan karna hona chahiye, nanki manavadhikaron ka ullanghan. Courts and governments must work together to ensure that justice is served while protecting the dignity and basic rights of every individual, including offenders. A balanced, humane approach to punishment will build a more just and equitable society.